Good morning, students. In the last video of biotechnology, class 12th, we were discussing about plant tissue culture, and in that we have left at the topic the haploids and triploids, embryo rescue, even artificial seeds. So these are the application of plant tissue culture and embryo rescue. What do you mean by embryo rescue? This is chapter plant cell culture and application. Embryo rescue, it is very difficult to produce hybrids in case of interspecific and intergeneric crosses. You know that when two organisms are different specifically and generically, then it's very difficult to produce their hybrid. Crosses between distantly related plants because of the abnormal development of endosperm, which causes premature death of the hybrid embryo and lead to sterile seeds. The embryo from such sterile hybrid seeds can be excised at an appropriate time and cultured on suitable nutrient medium to provide novel hybrids, which is otherwise not possible. This is known as embryo rescue. So at particular stage, the embryo is removed from the sterile seed, hybrid seed, and then it is cultured in the plant tissue laboratory. And this is the way we can rescue the embryo and safely produce the hybrids. Haploids and triploids. The technique of haploid production through anther and pollen culture as well as ovary culture is of immense use in the plant breeding to improve crop plants. It enables raising plant expression traits that are otherwise recessive. So techniques of haploid production through anther and pollen culture as well as ovary culture is immense use in plant breeding to improve the crop plant. This is used for crop improvement. It enables raising of plant expressing traits that otherwise recessive. Recessive traits के plant भी हम इसमें raise कर सकते हैं. Genetically homozygous diploid plants which serve as parent in crossbreeding and also produced by diploidation of haploid plant using colchicine chemical. So हम इनका पॉलीप्लॉइडी भी करा सकते हैं. डिप्लॉइडेशन मतलब पॉलीप्लॉइडी करवाना, क्योंकि ये रिसेसिव कैरेक्टर वाले प्लांट थे. पेरेंट प्लांट्स ऐसे प्लांट भी बना सकते हैं जो हमें क्रॉस ब्रीडिंग में काम आ सकते हैं. एंडोस्पर्म इज अ ट्रिप्लॉइड टिश्यू एंड हेंस एक्सीलेंट मटेरियल टू प्रोड्यूस ट्रिप्लॉइड प्लांट्स. By culturing endosperm tissue, triploid plants are obtained. The triploid plants usually show seed sterility or seedlessness, which is desirable in crop like citrus, apple, and pear. And this is the quality which is exploited because triploid plant is seedless. So like citrus, apple, and pear should be seedless. So we are developing it from triploid endosperm plant tissue culture. Somatic hybridization and cybridization. Many years sexual hybridization is successful for crop improvement. However, some method is limited in most cases. मतलब पहले बहुत टाइम से हम नॉर्मल रूटीन सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करते थे क्रॉप इम्प्रूवमेंट पे, पर ये मेथड लिमिटेड है बहुत केसेस में. जैसे इंटर स्पेसिफिक इंटरजेंडर क्रॉस इससे नहीं हो पाता, नहीं, बस यही दोनों इससे हो पाते हैं. इंटर स्पेसिफिक हम करा लेते हैं, इंटर जेनरिक हम करा लेते हैं. सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन जिसे हम पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, या एक्सीलेंट अल्टरनेटिव है ऑब्टेनिंग डिस्टेंट हाइब्रिड विद यूजफुल एग्रोनॉमिक ट्रेट्स. इससे हम अच्छे ट्रेट्स क्वालिटी वाले प्लांट्स ला सकते हैं, पैरासेक्सुअल हाइब्रिड्स बना सकते हैं. सोमैटिक हाइब्रिड्स भी इन्हें कहते हैं, विच वुड नेवर बी फॉर्म्ड नेचर में, तो बनेंगे ही नहीं है सेक्सुअल हाइब्रिड. एसेंशियली the protoplasts are isolated from two different plants and are allowed to fuse. प्रोटोप्लास्ट दो अलग अलग प्लांट से आइसोलेट करके उन्हें फ्यूज करवाएंगे तो हाइब्रिड हमें मिल जाएंगे. द फर्स्ट इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड हमने बनाया निकोशियाना ग्लोका का और निकोशियाना लैंग्सडॉर्फी का, जो कार्लसन और उसके एसोसिएट्स ने डेवलप करवाया 1972 में. लेटर मेल्चर एंड हिज टीम इन 1978 डेवलप फर्स्ट इंटरजेनरिक सोमैटिक हाइब्रिड्स between Solanum tuberosum, potato, and Lycopersicon, esculentum tomato, and the hybrids are known as pomatos and topatos. So Solanum tuberosum और Lycopersin esculentum tomato का हाइब्रिड बनाया कार्लसन ने. इंटरस्पेसिफिक था ये, और इनको इन्होंने नाम दिया पोमेटोज और टोमेटोज. एंड specific somatic hybrids
have been produced. Number of crops like brinjal में भी ऐसे hybrids बनवाए गए हैं. So these are the examples of tomatoes and potatoes. Development of the somatic hybrid in brinjal for transferring disease resistance from wild species of cultivable variety, flowers and fruit of cultivated brinjal, somatic hybrid C and D, wild type brinjal E and F. So it is also possible to produce cytoplasmic hybrids through protoplast fusion in which the genomes of one of the partner is lost. Alternatively, isolated purified organelle, chloroplast or mitochondria from one species can be fused with the recipient protoplast from a different type of plant. Organelle transfer, organelle uptake is taken in the cybrids to transfer useful cytoplasmic trait like herbicide tolerance and cytoplasmic male sterility. Production of secondary metabolites. Plant produce thousands of sophisticated chemical molecules. These include the chemical required for the plant basic metabolite process such as sugar, lipids, amino acid, nucleic acid, primary metabolites, and also some other additional products such as alkaloid, resins, tannins, latex. So प्राइमरी मेटाबोलाइट्स अमीनो एसिड न्यूक्लिक एसिड शुगर्स ये तो प्लांट की बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए उनको चाहिए होती हैं, पर जो ये बनाते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट एल्कलॉइड रेजिन्स टैनिन्स इनके लिए भी प्लांट को प्रोडक्शन के लिए भी हम प्लांट टिश्यू कल्चर कर सकते हैं. फंक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नॉट क्लियर although they have been implicated in the defense mechanism of plant against pests feeding by animal. However, many of the secondary products, especially various kinds of alkaloids, are of immense use in the medicine. Such compounds are produced in plants and only in the small amount in the animals. तो प्लांट के कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो बहुत यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं वो यहाँ दिए हुए टेबल में. आर्टिमिसिन प्लांट सोर्स आर्टिमिसिया से एंटी मलेरियल है, एज अ डायरेक्टा इंडिका से इंसेक्टिसाइडल है, बर्बरीन कॉप्टिस जैपोनिका से एंटी बैक्टीरियल एंटी इंफ्लेमेटरी है, कैप्साइसिन कैप्सिकम ह्यूमेटिक पेन ट्रीटमेंट में मिलता है, कोडीन पैपेवर एनाल्जेसिक है, डिगोजिसिन डिजिटलिस लैंटा से बनता है. ये कुछ ऐसे प्लांट है जिनको प्लांट टिश्यू कल्चर और भी आप नाम देख सकते हो अदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट बना के इनसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनवाए गए हैं, वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनते हैं और बायोरिएक्टर्स में इन प्लांट्स से प्रोडक्ट बनवाए जाते हैं. Somaclonal variation, it has been observed that long-term callus and cell suspension culture in the plant regenerated from such cultures are often associated with chromosomal variation called as somaclonal variation. It is this property of cultured cell that find potential application in crop improvement and the production of mutant disease resistance. तो somaclonal variation से disease resistance बनाई गई पोटैटो में. एंड लार्किन एंड क्रॉफ्ट 1981 ने प्रपोज किया सोमाक्लोन्स को फॉर प्लांट वेरिएंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर ऑफ सोमैटिक tissues. Similarly, the tissues from the which variants have been obtained is having gametophytic origins such as pollen or egg cell is known as gametoclonal variation. So Larkin and Screwcroft ने सोमाक्लोन्स को प्रपोज किया टर्म को और प्लांट वेरिएंट्स को ऑब्टेन किया टिश्यू कल्चर में सोमैटिक टिश्यूज से. ऐसे ही अगर एग गैमेट्स में के सेल्स में कुछ वेरिएशन आती हैं तो उन्हें गैमेटोक्लोनल वेरिएशन कहते हैं. जर्म फ्रॉम कंजर्वेशन की मेथड्स दिए हुए हैं, जीन ट्रांसफर मेथड्स भी दिए हुए हैं प्लांट्स में. तो जर्म प्लांट्स कंजर्वेशन और जीन ट्रांसफर मेथड्स यहाँ पर हमें जेनेटिक मैनिपुलेशन बता रहे हैं. जीन वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर. These are the some topics, remaining topics which are telling about the transgenic plant, which are telling about the gene manipulation. So this is the second part of the plant tissue culture, which we are going to study. Stress tolerant, what type of plants are developed, biotic stress tolerant, pesticide resistance, disease resistance. So with that only we were going to finish our chapter. Abiotic stress tolerance, transgenic plants as bioreactor, nutrient quality. So these topics which are left in the diagnostic proteins and biodegradable plastics. And with this only our golden rice metabolic
and other application, metabolic engineering, secondary products, and this is the biosafety in plant engineering will be dealing with next topics, and then the chapter will be finished. So there was an overview, that क्या क्या टॉपिक अभी हमको रह गए हैं. बायोसेफ्टी during the transgenic crop development, metabolic engineering, and secondary products. So we will be doing them in the next video class. Various types of products in nutrient quality can be improved in the plants. So with this, I'm going to end the lecture here. I hope you have liked the video. So share and subscribe my channel and share with your friends so that they can also learn biotechnology. Thank you and have a nice day.